beautiful family. Assalamualaikum. Assalamualaikum to all my beautiful family. It's always bringing great pleasure to be in the kitchen with Mrs. Begum. Mrs. Begum, take hold of your hatiyar. आज मैं बैठे बिठाए सारा दिन कीता मटर आलू दे पुलाव खान ते फिर मैं जल्दी उठी ते मैं कहा मैं जल्दी सारी प्रिपरेशन कीती ते मैं कहा चलो तानू भी नाल दखावां. Fantastic. In the kitchen, preparing, what are we preparing? मटर आलू दा पुलाव. Matar Pulao. It's going to be a treat to watch. मटर आप खाओ बहुत अच्छा लगता है. And this lovely lady here is going to use the desi hatiyar. What do you call this? You call this the doi. Doi. Kitchen chinana until you got your doi. Come on guys, let's do this. आजो. आलू मटर का पुलाव. हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 5 to 6 लौंग, 3 to 4 बे लीफ पत्ते, 2 वड्डियां लाचियां, 1 दालचीनी का पीस, 2 कप चावल, 1 लार्ज पोटैटो, 1 वड्डा प्याज, 1 कप ना मटर, 2 to 3 हरियां मिर्चां, 2 टेबलस्पून दही, 1 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लौंग, 2 टेबलस्पून काली जिंजर पेस्ट. सब तो पहले तेल पाना है. मटर आलू के चावलों के ना तेल थोड़ा ज़्यादा पैंदा है ते हुण तेल नूं थोड़ा गर्म होण दी. मैं पाना प्याज. प्याज नूं उन्हां तक पकाना जिन्ना तक ब्राउन नहीं होंदा. थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहना. प्याज ब्राउन हो गया. हुण काली जिंजर पेस्ट, नाल ही साबुत गरम मसाले, गरम मसाला, थोड़ा जिहा पानी, 2 टेबलस्पून फेंट के ना ते दही. जल्दी मिक्स करना है ताकि दही ना खराब ना हो. हल्की आग करके ना ते 2 to 3 मिनट पकन दियो ते ढक्कन ला दो. मसाला हो गया तो हुण इह च मटर पाने ने पैने ते नाल ही आलू भी पा देने इकट्ठे. जरा अच्छी तरह मिक्स कर दो. हल्की आग ते ना 2 मिनट वास्ते ढक्कन ला दो. एक चीज़ मैं भूल गई सा, हाफ टी स्पून नहीं रेड चिली भी पैनी सी. ते बस अच्छी तरह भून के ते हुण बस इह च पानी पाना है. 2 कप चावलों के ते 3.5 कप मैं पानी के पावांगी. ते हुण इहनूं उबाला आंदे हो जे. उबाला आ गया सी ते जरा थोड़ी देर पकना कि आलू जरा गल जाण ते फिर चावल पानी. आलू हो गए ने हुण उबाला ते हुण चावलों चों पानी कढ के ते सारे चावल पा दो. चावलों दे नाल जरा मिक्स कर ते उत्ते हुण पा दो ए मिर्चां. उन्ना चिकर पकाना है जिन्ना तक पानी ड्राई नहीं होता. बस पानी थोड़ा होर खुशक होएगा तो फिर दम ते रखना. पानी ड्राई हो गया तो दम ते रखना है. बिल्कुल हल्की आग करके ना ते 20 मिनट उन्हें दम ते रखना है. 20 मिनट बिल्कुल हल्की आग ते. 20 मिनट हो गए ने. हम कुकर बंद कर दो. चावल रेडी. खिले चावल बने ने बहुत अच्छे.
beautiful family. Here we have the plate of the Aloo Matar Pulao. And I'll tell you what, just looking at it, it's absolutely delicious. cucumber ਦੇ ਰਾਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਲਡ ਨਾਲ ਖਾਓ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ So I have to say, well done, Mrs. Begum. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ Definitely, I would advise everybody who's interested in pulao to definitely try out this recipe. ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਚ ਖਾ ਕੇ ਦਹਾਂ And Mrs. Begum is going to do the honors, and she's going to have a nice taste of this beautiful pulao. Oh, that looks nice. That looks nice. Very nice. Mrs. Begum and the salad. Guys, with myself, I'm not too keen on salad. Although, I mean, I do like salad when it comes to maybe a cheese salad baguette. But other than that, I just give it a miss. Fantastic. ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਾਈਟ Wow. Mrs. Begum, do the honors. ਸਿਖਾ Oh, okay, here we go. Right, as you know, I always take the first bite for my viewing family. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Here we go. ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ MashaAllah. Mrs. Begum, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ Well ਹਾਂ ਮੈਂ done. ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ well done. Your turn. Mrs. Begum, well done. ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ She's done ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ it. Both nice there. So, what's the famous word, Mrs. Begum? ਸਾਰੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। I love it when she says this. Fantastic. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਓ ਤੇ ਖਾਓ The invitation is valid. Inshallah ta'ala, if we can all make it here. Come on ਸਾਰੇ down. ਆਓ ਤੇ ਖਾਓ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ That ਤੇ looks ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ Yes. ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ So what did it say? Please comment down below. Love reading your comments. Mrs. Begum's always there, and I read them to her. But we enjoy reading the comments. Don't forget to put the lovely thumbs up and subscribe to the channel. Be a part of Shani's world. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Be a part of my family. And inshallah ta'ala, like I always say, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ we love you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ Take care till I love next you time. all. Thank you. Mrs. Begum back in the kitchen. Don't go Inshallah, anywhere. Thank you. Keep watching. Keep supporting. Love you all. Love you all. Thank you. Allah Hafiz.